Hello friends, most welcome Maths Rate YouTube channel. Here I discuss mathematics for higher education, so you can join and learn with me. So today I took a definition that is backward scalar matrix. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी बेसिकली कि बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर और सारे एलिमेंट हमारे जीरो हैं, तो उसको हम बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। सिमिलरली अगर एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ईच बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स इज सेम, है ना, इक्वल, तो उसे हम बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ऐसे ही कह सकते हो कि जैसे कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती थी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे जीरो एलिमेंट्स होते थे। उसी में अगर डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, स्केलर मैट्रिक्स। तो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स मींस एवरी बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। So let's define it first and then we will study about the properties of the backward scalar matrix. Okay, so let's define it. So a matrix of the form a matrix, a square matrix A which is of aij with the order n by n is called is called a backward diagonal, sorry, backward scalar. Matrix if this is aij is just equal to, this is your k times k, if this I plus j is just equal to n plus 1. If I plus j is just equal to n plus 1, so that element is from the backward diagonal element. Okay, so it means the backward diagonal element, every backward diagonal element is k, and otherwise all are zero. If we have, this is I plus j is not equals to n plus 1. So if I plus j is not equals to n plus 1, तो that will be non backward diagonal elements. Okay, वो backward diagonal elements नहीं है ना. Okay, so that will be zero. So this is the backward scalar matrix. Basically you can say a backward diagonal matrix in which every diagonal elements are same, every backward diagonal elements are same. Okay, so let's define the properties, discuss the properties of the backward scalar matrix. So फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसको हम व्हाइट स्ट्रिंग से लिखते हैं। ओके, सो द सम ऑफ टू backward scalar matrices is again as backward scalar matrices. Okay, so you can see because when we are adding two matrices we are basically adding the corresponding elements. तो backward diagonal पे जो elements पड़े हैं वो backward diagonal के elements से add हो जाएंगे, तो the sum will be the same in each of the position of the backward diagonal. Okay, so the sum of, you can just write here, the sum of two backward scalar matrices hmm, backward scalar matrices of same order is again a backward scalar matrix of that order. Okay, next you can just have, that is, if
if this is A is just equal to 0 and this is your K1, it means all the backward diagonal entries are same. So this is your K1 and this is 0. This is K1. This is a matrix of order n by n. Okay. Another matrix they are just taking A is just equal to, this is another matrix B, that will be also looks like this. 0, this is your K2, 0, this is your K2 and this is 0 and so on. This is your K2 and this is your K2. So this is the matrix also of order n by n. If you are adding these two matrices, you will get again a matrix with the backward diagonal entries is K1 plus 1, K1 plus K2. So then we can have, this is A plus B is just equal to 0 up to 0. This is when adding this K1 with K2, you will get this element is K1 plus K2. Similarly, this element with K1 plus K2, it means all the backward diagonal entries will becomes now K1 plus K2. So this again will be a backward scalar matrix of order n by, this is the backward matrix. Clear? So next let's talk about the product of two backward scalar matrices. Okay. So product is not necessarily, it's again a backward scalar matrix. So let us see, क्योंकि हमारे पास product of backward diagonal matrices का भी सेम ही नहीं होता है ना, ये चीज हमने देखी। तो इसका मतलब है दिट इज नॉट नेसेसरी। Okay, so let's write the second result. The product of two backward scalar matrices may or may not be a backward scalar matrix. However, the product of two backward scalar matrices of same order is always a scalar matrix। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता था वो एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता था। तो इसी तरीके से जब प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मैट्रिसेस बैकवर्ड स्केलर मैट्रिसेस करेंगे तो एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट विल बी सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज a scalar matrix of that order।
if this is A is another this there is some matrix, suppose that I'm just taking an backward scalar matrix like this. 0 0 of this is k1, 0 0 0 this is k1, and 0 this is your k1, and that is 0. ठीक है, एक हम और ले लेते हैं, दैट इज योर बी, एंड वी आर गोइंग टू प्रोडक्ट दीज टू मैट्रिसेस. ओके, तो दिस इज 0 अप टू 0 of this is k2, this is 0 up to this is k2 of time 0, this is your k2, this is 0, this is of order n by n, this is of order n by n. Now let's take the product of them and let us see कि हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी. बेसिकली दैट विल बी अ स्केलर. तो कैसे आएगी हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स, लेट अस सी. देन दिस ए बी विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को लेके चलेंगे. तो फर्स्ट रो में क्या है, 0 0 0 अप टू k1, इट विल मल्टीप्लाई टू दिस फर्स्ट कॉलम and then second column, and in this way we will be multiplied this. तो जब हम 0 0 0 of k1 will multiply with the first column, तो फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 विद मल्टीप्लाइड विद k2. तो यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा, दिस इज k1 इज मल्टीप्लाइड विद k2. एंड देन अगर हम ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से करेंगे, क्योंकि k1 इज लास्ट पोजीशन पे है और यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे 0 पड़ा होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0. तो ये सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, दिस विल बी 0. एंड सिमिलरली जब सेकंड हमारे पास रो लेके चलेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0. फिर जब सेकंड पोजीशन पे जाएंगे तो ये सेकंड लास्ट पोजीशन और यहाँ पर सेकंड लास्ट पोजीशन पे k2 पड़ा होगा, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड, इट गिव्स k1 टाइम्स k2 एंड सो ऑन, दिस इज 0. तो कुछ इस तरीके के हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0. So ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी, दिस इज अगेन ऑफ ऑर्डर n by n, and that will be a diagonal matrix in which every diagonal element is same, so that is called scalar matrix, है ना. So this is a scalar matrix. So it means the product of two backward scalar matrix is again a that will be a scalar matrix. Okay, the product of two backward scalar matrix is a scalar matrix of that order. Clear? If we are multiplying some scalar in a backward scalar matrix, so that will be remains the backward scalar matrix, because constant will be multiplied to element, each and every element of the matrix. और जहां जीरो है वहां जीरो रहेगा, जहां नॉन जीरो है वहां नॉन जीरो रहेगा. तो that will be the thing. Okay, so let us see. थर्ड इसका हम लिखते हैं, थर्ड वन. So the scalar multiple, scalar multiple we are multiplying some real or complex constant in a matrix. तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो द स्केलर मल्टीपल ऑफ अ बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन if this is a is just equal to 0 0 0 up to k1, this is 0 0 up to this is k1, this is 0, this is k1. Okay, so this is your a. Okay, तो इसमें किसी स्केलर सपोज है, किसी स्केलर के से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी के. तो आई एम जस्ट टेकिंग एनी
be any scalar. Then this Ka is defined when per multiplying each and every element by k. तो जहाँ जीरो है वहां तो जीरो ही बना रहेगा, वट एवर द स्केलर यू चूज. This will be k times k1, and this is 0 up to this is k times of k1, and 0 up to here it will be k times of k1, and this is all 0. So this again a backward scalar matrix. This is again a backward scalar matrix. Clear? Next, if A is backward scalar matrix, then the positive integral power of A however the positive odd integral of A is a okay. तो this is a very important result कि जब हमारे पास A is a backward scalar matrix, then the positive integral power of A may or may not be a backward scalar matrix. However, the positive odd integral powers of A is a backward scalar matrix. अगर odd integral power है तो that will be a backward scalar matrix. Okay. मैट्रिक्स वाइल जो पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर बिकम्स अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब वो डायगोनल बन जाएगा और वो हमारे पास बैकवर्ड डायगोनल बना रहेगा अगर ऑड पावर है. तो पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए द बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, while you can just say while the positive even integral power of A is scalar matrix. Okay, so this is, you can just have, if this is A is just equal to 0 0 up to k, this is your 0 0 up to this is k 0, this is some मैट्रिक्स. अब इसकी इंटीग्रल पावर लेनी है ना, तो अगर हमारे पास इसकी हम ऑड पावर लेते हैं तो इट विल बी अगेन बैकवर्ड स्केलर. तो ऑड पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज ए की पावर सम 2m+1 है ना, इवन प्लस सम ऑड, सम नंबर 1, देन इट विल बिकम्स ऑड. तो इसको जब हम करेंगे तो दिस बिकम्स ऑफ द फॉर्म दिस k की पावर 2m+1, and this will be 0 of this is k की पावर 2m+1, and in this way this is your k की पावर 2m+1. इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे.
So this is a odd integral. So this will be a backward scalar. और अगर इवन पावर लेते हैं तो इट विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट मीन स्केलर मैट्रिक्स. अगर इसको हम इवन पावर लेते हैं, इट मीन्स ए डी पावर 2m लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज योर k की पावर 2m, 0 0, और सारे यहाँ पर जीरो आ जाएंगे. जीरो, दिस इज k की पावर 2m, दिस इज जीरो, this is 0, this is 0, and this will be your k to power 2m, where we can say where this is m is greater than 0. Clear? फिर सिक्स्थ रिजल्ट, दिस इज अबाउट इंटीग्रल पावर. ठीक है. तो अगर इवन पावर है तो हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, इट मीन्स डायगोनल में एंट्रीज आएंगी. और अगर तुम्हारे पास वो हम ऑड इंटीग्रल पावर ले रहे हैं तो वो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगी, जिसमें बैकवर्ड डायगोनल पे एंट्रीज आएंगे, दैट विल बी बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स. ओके. सो फॉर एनी पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड नंबर्स. ओके. लेट्स फिफ्थ वन. If I'm taking some non-zero, non-null matrix, hmm, not responding, ये क्यों आ जाता है लिख के? Okay, so if A is any non-null matrix, okay, is null, non-null means if इसके जो बैकवर्ड डायगोनल एंट्रीज पे कोई भी सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं, या फिर है ना नॉन जीरो होंगे तभी उसको नॉन नल बोलेंगे, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो बैकवर्ड डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो अगर एक भी नॉन जीरो है तो सारी की सारी नॉन जीरो रहेंगी. तो इफ ए इज नॉन जीरो इज अ बैकवर्ड स्केलर matrix, then this is 8 power minus 1 is also a backward if this is a is looks like this, ये हमारे पास है, दिस इज की, इसमें के नॉन जीरो है, तभी तो इसको हम नॉन जीरो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे. दिस इज के इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट्स इनवर्स विल बी पॉसिबल. और उसका इनवर्स कैसे निकलता है, लेट अस सी. देन its inverse, a inverse is possible, and its inverse will be looks like this: 0 0 up to this is 1 upon k, this is your 0 up to this is 1 upon k, and this is 0, this is your 1 upon k, 0 0 0 0. This is your a inverse. Okay. And that will be order will be the same order. तो हमें रेसिप्रोकल ले लेना है उस नॉन जीरो नंबर के का, एंड द इनवर्स ऑफ द बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन अ बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? इट जस्ट रिमेन द सेम. क्लियर? इफ यू आर गोइंग टू टेक ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ अ बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन अ बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स. So this sixth result is what? If A
is a backward scalar matrix. Then this is A dash is also है ना, it's again a backward scalar matrix. Okay, so उसका ट्रांसपोज भी बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स होता है. तो बेसिकली वी आर चेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स. इट विल बी रिमेन द नॉन जीरो, और जहां पर नॉन बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो ही बने रहेंगे. नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेवेंथ रिजल्ट. इफ this is a is just equal to 0 0 up to this is k, this is 0 0 0, this is k of 0, this is so on, and this is k times of 0 0 0. Okay, is a backward scalar matrix of order n, then determinant of a is just equal to minus 1 to power greatest integer n by 2. सिंपली k को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स k की पावर n, है ना. तो डिटर्मिनेंट तब ऐसे ही निकलता है व्हेन माइनस वन की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई टू, है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता है, तो दिस इज k की पावर n. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेस. तो ट्रेस सिंपली हमें पता है या तो जीरो होगा या फिर उसका बैकवर्ड डायगोनल, जो हमारे पास बैकवर्ड डायगोनल है उसके जो मिडिल वाला टर्म होगा दैट विल बी. तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एन ऑड है या फिर इवन. ओके, अगर एन इवन है तो उसमें जीरो ही आएगा, है ना. डायगोनल की इंट्रीज में जीरो ही रहेगा मिडिल वाला टर्म. सो लेट अस सी. सो इफ this is a is some matrix of like this is 0, k, this is 0, oh this is k, this is 0. So this is okay, this is k times 0 0 0 is a backward scalar matrix of order n. Then trace of a is just equal to, it will be 0 if n is even, it will be k if n is odd. Clear? So trace of a is just equal to 0 if n is even and k if n is odd. So that is your backward scalar matrix of order n. Clear? तो होप सो कि आपको बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा. उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. और ट्रेस तो बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है तो इजिली वी कैन सी कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके अंदर क्या है. सो डायगोनल एंट्रीज पे अगर कोई k मिल जाता है, इफ n विल बी ऑड देन डेफिनेटली देयर विल बी सम पोजीशन इन द डायगोनल एंट्रीज वेयर विल बी k, otherwise it will be 0. So according to that, if n is even then it will be 0, if n is odd then this trace will be k. एंड डिटरमिनेंट का फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज बेसिकली माइनस वन की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई टू इंटू के की पावर n. के को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस. ओके. तो good luck. We will talk in we will meet in the next lecture. Thank you so much.